Hello everyone, it's Ripple Shah. Regarding the very important information nowadays, the people are traveling to Gujarat, either landing in Ahmedabad airport or landing on Mumbai airport and going by car to the Gujarat. Very important, listen carefully. Because of the Delhi incident, you know exactly what happened. Couple of days before in Delhi, there is a bomb blast in the car. There is a high alert in Gujarat. The police are stopping lots of the car since yesterday and they're checking thoroughly. Now the police knows the people are taking alcohol to Gujarat by the duty free or in the bags from the supermarket. So they know the weak point. They know how to take the money out from the NRI. Two incidents happened, one yesterday evening and today morning, one of them. One family from UK landing in Virgin Atlantic VS354 and they caught them in Billard. And one from Canada. The amount they're asking more than 5 digit. So forget it. Your holiday will ruin. हॉलीडे खराब हो जाएगी आपकी. बिकॉज ऑफ द दिल्ली इंसिडेंट क्या हुआ है सबको पता है. इंसिडेंट सबने न्यूज में देखा है, चर्चा करने की जरूरत नहीं है. आई विल कम टू द पॉइंट. इफ यू आर गोइंग गुजरात, लैंडिंग इन अहमदाबाद, बड़ौदा और गोइंग मुंबई एंड गोइंग बाय रोड टू गुजरात, do not try to take any alcohol at least in November, December. Let it settle everything. Don't take anything because you don't have a permit. There is no permit online and there is no permit on the airport. So yesterday and today there is high alert on Bihar checkpost. I have find it out today morning. Each and every car they are stopping and checking what is there inside. And guess if they found alcohol, you can't take alcohol without permit in Gujarat. Anyway, we all know. So they're taking the advantage. सो मैं स्ट्रांगली बता रहा हूं आपको इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इफ यू आर गोइंग गुजरात इन नवंबर और डिसंबर, रिसेंटली thousands and millions of people goes. This is the season time to go India anyway, November and December. So people are from all over the world traveling to Gujarat. I would strongly suggest to all my followers and subscribers, do not take alcohol if you are traveling to the Gujarat. You will be in big trouble. आपकी हॉलीडे खराब हो जाएगी रास्ते में ही, घर पे पहुंचने से पहले ही. 2 इंसिडेंट ऑलरेडी हो गए हैं. Because of that incident, there is a lots of things are going on the highway at the moment. So strong suggestion, I will repeat, do not take alcohol, especially this things is high alert at the moment. आपकी हॉलीडे खराब हो जाएगी. 2 इंसिडेंट मैंने बताया कि हो गए हैं, तो वेरी केयरफुल. ગુજરાતીમાં કેવું છું, પીધા વગર ચાલશે પણ ફસાશો તો 10-20-25 હજાર રૂપિયા કળેલે છે, 200-500 રૂપિયામાં કશું જ નહીં થાય. They know the weak point. NRI તમારો પાસપોર્ટ જ લઈ લેશે, શું કરવાના તમે? आई विल रिपीट इन हिंदी. अगर आपका पासपोर्ट ही ले लिया तो क्या करोगे भाई आप? आपका हॉलीडे बेकार हो जाएगा. गाड़ी साइड में रख देंगे वो लोग. उनको पता है कि भाई परमिट नहीं मिल रही है एयरपोर्ट पे, और वो चेक करने में फॉरगेट अबाउट बॉम्ब एंड गन, वो तो नहीं है आपके पास, लेकिन अल्कोहल मिल गया तो भी आपको फंसाएंगे. ये चीज में फंसाएंगे ना, उनको तो पता चल गया. एंड आई विल रिपीट इन द इंग्लिश. पीपल आर ट्रैवलिंग इन गुजरात बाय रोड from Mumbai or Ahmedabad, do not try to take the alcohol. You will be in a big trouble if they stop you. And they are stopping now. So many car, 50 car out of 100 car. So there is a chance you will be stuck and you will be in a big problem. तो जो भी लोग NRI है, ये वीडियो पूरे वर्ल्ड के लिए है, अमेरिका, कनाडा, UK, doesn't matter. If you are traveling to Gujarat, do not take the alcohol because of this incident. They are checking each and every car in a Bhilad, and Bhilad in Gujarat. भिलाड़ चेकपोस्ट गुजरात में है और वो भिलाड़ पे ज्यादा अभी सिक्योरिटी है. तो गुजरात में अल्कोहल दिखा तो बात ही खत्म हो गई भाई. सबको पता है हमको अलाउ नहीं है अल्कोहल. तो मेक श्योर, रिमेंबर माय वर्ड. जितने भी मेरे फॉलोअर्स है, जो फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर है, आपने सब्सक्राइब पे क्लिक किया है तो आई विल पे यू फॉर दैट. डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर टाइम बीइंग. थैंक यू सो मच. बाय फॉर नाउ.